मामलों को लेकर के आयोजित करते आए हैं। और कभी कभी समसामयिक मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हमारे बीच में आ जाते हैं और उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं और उनके विषय में भी चर्चा करते हैं। इसी तरह इस बार के दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। और पहला मुद्दा है जो मणिपुर इशू है। मणिपुर में क्या हो रहा है, काफी वायलेंस है और बहुत सारे लोग जो वहाँ से संबंधित नहीं है नॉर्थ ईस्ट से, उनको अभी बहुत सारी जानकारी भी नहीं, हालांकि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर इसको हम समझ पाएंगे। हमारे बीच में जो एक्सपर्ट हैं वो इसको बताएंगे कि बेसिकली ये पूरा इशू क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है डाटा प्रोटेक्शन बिल, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का जो मसौदा तैयार किया गया था, एक ड्राफ्ट, उसको अभी मानसून सीजन में 2023 में कैबिनेट ने पास किया है और अभी वो लोकसभा और आपके राज्यसभा में आएगा चर्चा के लिए और इसके बाद उसको फाइनल किया जाएगा। तो हम इसमें दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला सेशन हमारा 10:30 से 12 तक, मतलब 12 तक रहेगा, 1.5 घंटे का। और फिर एक अगला जो सेशन है वो 12 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। तो आज के हमारे पहले जो कार्यक्रम का जो हमारा पहला सेशन है, उसके हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, आज के जो इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, उनके बारे में हम आपको अवगत करा दें। हमारे बीच में माननीय श्री पाओलियन लाल हाउकिप जी हैं, जो बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं। आप मणिपुर से, चूरन चंदपुर डिस्ट्रिक्ट से आप वहाँ बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप विधायक हैं। और आपने बहुत सारे जो ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके लिए आपने लड़ाई लड़ी है और उसके लिए आप काम करते हैं। विशेष तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र बेहतर ढंग से काम करे हमारे देश में, उसके लिए आप काम करते हैं। फिर दूसरे हमारे जो सम्मानीय स्पीकर्स हैं वो मारिया मांगटे जी हैं, जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से संबंधित हैं और वो उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं। और ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी से भी वो जुड़ी हुई है, जो लगभग 7 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर ये सोसाइटी काम करती है और आप भी काम कर रहे हैं। फिर हमारे बीच में रहेंगे डॉक्टर रॉबिन राउमी, जो जर्मनी से डॉक्टरेट हैं ह्यूमैनिटी में, और आप मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी जैसे और बहुत सारे आपने अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपने प्राप्त किए हुए हैं। और आप यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पीस काउंसिल के लिए भी आप काम कर चुके हैं। फिर चौथे महत्वपूर्ण स्पीकर हमारे बीच में है अपोस्टल एनजे कोंघे जी, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं जेरूसलम ग्लोबल मिनिस्ट्री नागालैंड यूनिट के। और आप वैश्विक शांति सद्भावना के लिए आप काम कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में आप काम करते हैं। लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्वक सद्भावपूर्ण वातावरण में रहें, उसके लिए आप सभी धर्मों और मानवता के लिए आप काम कर रहे हैं। तो हमारे बीच में रहेंगे। और फिर हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण पटेल जी हैं, और प्रवीण पटेल जी के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कई सारे कार्यक्रम में आप यहाँ पे थोड़ा सा टेम्पल एरिया है तो लोग आते जाते रहते हैं, हल्ला भी करते हैं, तो क्षमा कीजिएगा। शिवानंद भाई जी, तो हमारे बीच में प्रवीण पटेल जी हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था, तो उनको थोड़ा सा डायरेक्शन में दे रहा था। तो हमारे बीच में अगले स्पीकर रहेंगे प्रवीण पटेल जी। प्रवीण पटेल जी के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम लोग सब कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप कन्वेनर हैं। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कई आप जगहों पर काम कर चुके हैं। और विशेष तौर पर आदिवासियों के लिए, आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में उनकी ह्यूमन राइट्स के लिए, उनके उद्भव के लिए, उनके अधिकारों के लिए आप काम कर चुके हैं। और कई बार हम चर्चाएं भी हुई हैं। और एक कार्यक्रम जो हमारा आयोजित होता है आप सब के ही सहयोग से आयोजित होता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे
डॉक्टर प्रवीण पटेल जी को कि वो हमारे कार्यक्रम में आए और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। नमस्कार शिवानंद भाई, और मैं भी सभी साथियों का स्वागत करता हूं, खास करके हमारे आज के चारों स्पीकर्स के, जो गेस्ट स्पीकर कह सकते हैं हम। मणिपुर की हम लोग बात कर रहे हैं आज इसलिए कि आज मणिपुर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ भारत का नहीं मगर ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जहाँ तक उत्तर पूर्वी राज्यों की बात आती है, मणिपुर के जब हम बात करें तो वहां पर ये राजवंशी शासन था जब अंग्रेजों आए, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड में जाके फिर मैं करंट सिचुएशन में आ रहा हूँ। तो आज जो सिचुएशन थी मणिपुर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट में, वो ऐसी थी, वहां पे मैतेई और मणिपुरी जो हम जिसको बोलते हैं कि हम इम्फाल की वैली के लोग, जिसको हम खास करके ये जो नागालैंड में कुकी, नागाज एटसेट्रा, ये उनके मूल निवासी हैं, वॉरियर हैं, ट्राइब ये पहले से ही वॉरियर ट्राइब है। राजा मैतेई थे और तीनों साथ में रहते थे, मैतेई, नागा एंड कुकी। और किसी विदेशी की हिम्मत नहीं हुई, इंक्लूडिंग ब्रिटिश, के इन लोग ने इनके ऊपर शासन कर पाए। इवन मुगल पूरे भारत में राज किया, मगर मुगल सल्तनत भी वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हर बार वो मार खा के वापस आए। ये इनका इतिहास है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब केवल 3 राज्य थे, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। 50 के दशक में कोई विद्रोह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद में 60 के दशक में बृहद नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड की लिए एक विद्रोह हुआ, जो 1963 के अंदर नागालैंड को एक स्टेटहुड मिलने के बाद वो बात खत्म हुई। उसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है कि नागालैंड के साथ क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, इंक्लूडिंग रिसेंटली इन सितंबर 2019। वो इश्यू नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 75 के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश एक, और मिजोरम 1987 में इनको स्टेटहुड मिला। जब हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो वहां के मूल निवासी जो है वो मैतेई, नागा एंड कुकी। नागा एंड कुकी आदिवासी है, मैतेई हिंदू है। भारतीय संविधान के अंदर जो आदिवासियों को विशेष प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसके अंतर्गत वहां पर मणिपुर में 371, पूरे 7 स्टेट में है, ABCDE अलग अलग उसका है, मगर इस प्रोविजन के अंतर्गत कोई भी आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। समस्या यह है कि मैतेई आदिवासी नहीं है, और नागा आकर जमीन खरीद सकते हैं, मगर मैतेई ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज अ इश्यू, एक इश्यू ये भी है। मैतेई के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि कुकी जो है इस देश के मूल निवासी नहीं है, क्योंकि वो बर्मा और म्यांमार, जो आज का म्यांमार है, वहां से आए हुए हैं। कुकी बर्मा और निकटवर्ती मिजोरम में भी है, नागालैंड में उनकी मौजूदगी बहुत कम है। अधिकांश लोगों का मानना है कि मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मैतेई को आदिवासी घोषित करने की केंद्र को सिफारिश करने का जो निर्देश दिया गया, उसके बाद से ही जो है पूरी जो है ये जिसको कहें हंगामा, मारपीट और मारकाट सब कुछ चालू हुआ। मैतेई की जो नाराजगी है उसको हम कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मई 2023 में हिंसा के लिए मैतेई को उकसाने के लिए भेदभाव का इस्तेमाल किया गया, ऐसी बातें भी होती है। ये एक दुष्प्रचार है, क्योंकि कुकी मणिपुर के मूल निवासी नहीं है, ऐसा ये लोग मैतेई कहते हैं। वे कहते हैं कि वे म्यांमार के हैं, अवैध प्रवासी है और हमारी भूमि पर अतिक्रमण करके यहाँ रह रहे हैं, और वे नशीली दवाओं का व्यापार, जैसे पोस्ता की खेती, पोपी सीड जिसको कहते हैं, ये भी एक कारण है, ये जो बता रहे हैं। दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। कुल मिलाकर हिंसा जो है ये अलग अलग लेवल में चलती है। मैतेई जो है उनका पॉलिटिकल एक जिसको कहेंगे प्रभुत्व है, पॉलिटिकल दे आर मोर पावरफुल। इन लास्ट टू डिकेड के अंदर जितनी हड़ताल हुई, तालाबंदी नहीं हुई, उतनी 80 और 90 के दशक के अंदर में हुई थी। कुकियों ने भी अपने हथियार डाल दिए, विकास हुआ, सड़कें बन गई, सब कुछ हुआ, मगर म्यांमार में जो अभी हमारा चल रहा है, जो जिसको कहें कि सिविल वॉर, उसकी इम्पैक्ट से मणिपुर अछूता नहीं है। म्यांमार में भी काफी बड़े पैमाने में हमारे जो है मणिपुर के जो निवासी हैं, जिसको हम कुकी कहते हैं, उन लोग वहां पे भी रहते हैं। म्यांमार की जो सेना के द्वारा जातियां की गई, कई लोगों को जो है उसके कारण पड़ोसी राज्य मणिपुर
और मिजोरम हैज आल्सो बॉर्डर्स विथ म्यांमार। तो ह्यूज लेवल में शरणार्थी आए, जो लगभग ऑफिशियल फिगर इज 2800, अनऑफिशियल फिगर हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट 20,000 रिफ्यूजीज आर देयर इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली हम भारत के अंदर रिफ्यूजी को लेके कोई हमारे पास में कोई विशेष कानून नहीं है। वी आर सिग्नेटरी, जिसको यूएन के सिग्नेटरी के साथ हम लोग मिले हुए हैं, हमारी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर जब घर की बात करते हैं तो हम घर के अंदर इसको रिफ्यूजी मानने से भी मना करते हैं। मणिपुर के जो आज की हिंसा है, ये भूमि और विशेष अधिकारों के विवाद से उठी हुई है। राज्य में धार्मिक और जातीय समुदाय के बीच विभाजन पैदा करना, ये पॉलिटिकल कुछ ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये उनको एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कह सकते हैं या जो भी कहेंगे, उसके लिए ये चीज उनको सूट करती है। मैतेई समुदाय के खिलाफ आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन जो अभी चल रहा है, उसमें मोर देन ऑफिशियल फिगर तो 54 की, अनऑफिशियल फिगर शायद 100 से ज्यादा होगा, इंक्लूडिंग वन IRS ऑफिसर, उसकी भी भीड़ द्वारा हत्या की गई है। पुलिस कमांडो के गोली मारकर हत्या करना ये भी शामिल है। स्टार्टिंग की बात जब कर रहे हैं तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, उनके द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च जो चुरचांदपुर में के जिले के तोरबुंग इलाके में हुई, वहां से हिंसा स्टार्ट हुई, ऐसा सरकार का कहना है और लोगों का मानना है। बाकी ये भी हकीकत 100% नहीं है। मैतेई समुदाय द्वारा आदिवासी समुदाय की जो ST का दर्जा है उसकी मांग कर रहे हैं। नागा और कुकी और अलग दूसरी जनजातियों है, ये उसके अंदर में उसको मैतेई को आदिवासी मानने से जो मतलब उनका विरोध है, उस पर कह सकते हैं। इस मार्च के दौरान एक सशस्त्र भीड़ जो स्टूडेंट्स की मार्च थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ मैतेई समुदाय के सदस्यों पर हमला किया और जिसके जवाबी हमले में घाटी के अंदर ये मारकाट चालू हुई। ये भी इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। पूरे राज्य में आज हिंसा फैली हुई है। सरकार द्वारा कुकी गांव को बेदखल करना, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट। संरक्षित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण करना और तनावपूर्ण स्थिति के अंदर में इसको बढ़ावा देना और मैतेई समुदाय के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी को भी बढ़ावा देना, इसके लिए सरकार जो है वो दोषी मानी जाती है, ऐसा लोगों का भी कहना है। और जो इंडिकेशन है वो भी हम उसी ओर हमको ले जा रहे हैं। मणिपुर के संघर्ष को समझना है तो कुकी लोग पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी को जब हम देखते हैं तो कुकी को हम पाते हैं कि वो भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है और म्यांमार के भी है। ये सब पहाड़ी जनजातियां हैं, चाहे वो देश इधर का हो या उधर बॉर्डर एरिया के अंदर, इन लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। अधिकतर उनकी संख्या जो है वो भारत में है और मणिपुर में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाकी हिस्से मणिपुर के तरफ यदि हम देखते हैं तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास का इतिहास रहा है। मैतेई आबादी आधी से कुछ ज्यादा है, जबकि आदिवासी समुदाय जिसमें कुकी और नागा शामिल है लगभग 40% है। कुकी 25% एंड नागाज आर 15%। मैतेई मोस्टली इम्फाल वैली में रहते हैं, जबकि आदिवासी समुदाय पहाड़ी जिलों में रहते हैं। हालांकि मैतेई मुख्य रूप से हिंदू है, अपनी प्राचीन मान्यताओं का भी पालन करते हैं, मगर कुछ 8% हिस्सा मैतेई का वो मुस्लिम धर्म भी पालन करते हैं। जबकि कुकी और नागाओं की तुलना में मैतेई दे आर मोर एजुकेटेड, अधिक शिक्षित है और राज्य के व्यापार और राजनीति में उनका एक ज्यादा वर्चस्व है। अधिकांश कुकी एंड नागाज दे आर क्रिश्चियंस। कुछ कुकी जो है भारत और बाकी के कुकीज जो है म्यांमार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। मणिपुर के कुकी जो है वो कई शताब्दियों पहले म्यांमार से आए थे, ये इतिहास कहता है। शुरुआत में मैतेई शासकों द्वारा पहाड़ियों में उनको बसाया गया। शासक इसलिए कह रहा हूँ कि शासक ऑलवेज जो पहले के भी थे वो सब मैतेई थे और उन्होंने आदिवासियों की जरूरत समझी। पूरे इनको स्टेट को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए इनको कुकी और नागा ही मदद की, इसलिए उनको उनका पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। इम्फाल घाटी के मैतेई लोग और घाटी पर अक्सर हमला करने वाले नागाओं के बीच एक बाधा के रूप में काम किया जा सके, इस प्रकार इनको शासकों द्वारा भी संरक्षण दिया गया। नागा एंड कुकी ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के विरोधी है, मगर अभी की बात जब करें तो मैतेई के विरोध में दे आर वन। लास्ट 15-20 इयर्स में उग्रवाद जो है काफी कंट्रोल में आया है।
कुल मिलाकर हम हिंसा की बात करें तो हड़तालें और तालाबंदी अभी नहीं हो रही है जितनी पहले 80-90 के हुई थी। कुकियों ने अपने हथियार डाल दिए, विकास हुआ, सड़क बन गई, मगर म्यांमार की जो अवस्था के बारे में मैंने पहले बताया, ड्यू टू सिविल वॉर सिचुएशन इन मणिपुर वो डिटेरियोरेट हुई। अराउंड जो कहा मैंने कि 20,000 शरणार्थी आए हैं, सरकार उसको 2800 कह रही है, मगर इनको भारत सरकार की कोई शरणार्थी की नीति नहीं होने के कारण अभी उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम है। ये अलग इश्यू है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। ड्यू टू द सिविल वॉर ये कह सकते हैं, इसके अंदर म्यांमार के अंदर जो जिसको कहे ड्रग्स का ट्रेड, जिसके अंदर मिजोरम और मणिपुर के माध्यम से जो दवाइयां, मतलब ये मैं अफीम की बात कर रहा हूँ या ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी समुदाय शामिल है उसके अंदर इन लोग कुकीज और नागास का उपयोग करते हैं, ज्यादातर कुकीज का, और दूसरे लोग जो है दोज हु आर नॉट ट्राइबल्स उन लोग पैसे कमा रहे हैं, इस प्रकार का भी आरोप लग रहा है। दूसरी बात, सीरियस सिचुएशन कैसे हो गई, अराउंड 4,000 आर्म्स जो आर्मरी से, स्टेट आर्मरी से चोरी हो गए, लोगों ने उठा के ले गए। पुलिस ने कहा हम यदि उसको रोकने की कोशिश करते तो हमें गोली चलानी पड़ती, और गोली चलाते तो मामला और बिगड़ जाता, इसलिए हथियार जो है उन्होंने लूटने दी है। ये हंसी आए ऐसी बात है, कोई इसको विश्वास नहीं कर सकता कि आज हमारी पुलिस इतनी कमजोर है कि उनके संरक्षण से अंदर लोग आए और हथियार लूट के ले जाए, वो भी एक दो नहीं, more than 4,000 weapons, और these weapons are the root cause of all the trouble। सरकार ने बोर्ड लगाए, रिक्वेस्ट किए कि भाई जितने भी हथियार चोरी कर गए हैं वो आके रिटर्न करो, एज इफ वी आर लिविंग इन फुल्स पैराडाइज, जैसे हम लोग सब मूर्ख है, इस प्रकार की आप बात करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमने हथियार मैतेई को लुटवाए हैं, उनको हमने दिया है, वी हैव आर्म्ड द मैतेईज, दिस इज व्हाट वी आल्सो सजेस्ट एंड वी आल्सो से द सेम थिंग। दूसरी बात, ऑलरेडी देयर आर 30,000 वेपन्स, ऑफिशियल लाइसेंस्ड वेपन, ये भी ऑफिशियल है। जब भी कुछ भी बात होती है इलेक्शन के पहले या कभी सरकार की नोटिस होती है, जिसके भी लाइसेंस हथियार है उनको रिटर्न करने पड़ते हैं। बट हियर इन मणिपुर डिस्पाइट 30,000 लाइसेंसी हथियार है, उसको रिटर्न करने के लिए भी आपने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यू वांट द पीपल टू बी आर्म्ड। ये मैं बात इसके आगे फिर हम करेंगे। 269 चर्चेस जलाई गई है, जिसमें करीब 50 एक चर्च जो है मैतेई की भी है। मैतेईज आर आल्सो, सम मैतेईज आर आल्सो क्रिश्चियन, दे हैव देयर चर्चेस आल्सो। अराउंड 50 चर्चेस जो मैतेई की है वो जली है, और मोर देन 200 चर्चेस जो है या क्रिश्चियन चर्चेस है उनको जलाया गया है। कुछ इलाके को छोड़ दिया, हम इम्फाल घाटी गए तो अधिकांश आदिवासी जो है कुकीज एक्सेट्रा, ये लोग पहाड़ियों पर चले गए हैं टू सेव देमसेल्व्स, ना मारपीट करने नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। हम शांति की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीस मिशन। वेयर इज द स्टार्टर? देयर इज नो स्टार्टर एट ऑल। न्यायिक आयोग कमीशन, देयर इज नो कमीशन। और यदि हम कमीशन के नाम से कुछ बात करते हैं तो देयर आर ऑलमोस्ट 40 to 50,000 refugees who are staying in shelters. They are living in horrible condition. There is nothing like government, there is nothing like help. It is the civil society, जो सिविल सोसाइटी है, सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन लोग अपनी तरफ से जो मदद करना चाहे वो करते हैं, बट देयर इज अ लिमिटेशन। इसके अंदर में भी उनको भी सरकार का और बाकी का जो है लोगों की तरफ से उनका दिक्कत आती है। लोगों का सामान लूटा गया है, नष्ट हो गया है, और मुआवजे की कोई घोषणा आज तक नहीं की। देयर इज नो compensation announced even today, no package, nothing. And as we have said that the civil society has got the responsibility to regather the things, इनको वापस एक किया जाए। समाज के अंदर, लोगों के अंदर, भारत के नागरिक हैं, चाहे कुकी हो, नागा हो या मैतेई हो, they are all our brothers. How the peace can come? कैसे आ सकते हैं? उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। हथियार वापस लेना, नुकसान जो हुआ उसकी मुआवजे की सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, मगर उसको जमीन पे उनको पहुंचे उसकी फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना, ये सब चीजें दिखती है। बट इन लास्ट 2.25 months, जिसको कहें हम 70 दिन करीब हो गए होंगे, वी हैव सीन नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, who are responsible? Unfortunately, the Prime Minister of the country has not spoken a single word till date. हम वहां पे यूरोप जा रहे हैं, फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उसी दिन वहां के लीडिंग न्यूज़पेपर
strongly criticize करता है कि when your house is burning, when home is burning, you are here. इस टाइप का कुछ मैसेज उन्होंने दिया। और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट सभी यूरोपियन देश की है, more than 900 पार्लियामेंट, they have passed a resolution कि भाई भारत के अंदर धर्म के नाम पर आप आतंक चला रहे हैं, you are targeting people, you are killing people, and all this thing is going on, and the government is helpless onlooker. तब हमारी सरकार कहती है कि they are intervening, हमारे मामले, आंतरिक मामले में आप दखल दे रहे हैं, you are interfering in our internal matters. और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, दुनिया एक है, both things cannot go together. So now I hand over back to Shivanand bhai to moderate further, and I will request the MLA sir to come forward. And the last thing which I should tell, access to justice. People are in बड़े पैमाने पे उनके न्यायिक अधिकार छीने गए हैं. Injustice has been done. We must make a system, foolproof system, where we can help them by getting access to justice, so that in case anything is to be done, they should not spend a single penny from their pocket, and we should help them. How we can help them, that also we can discuss on some other day. Thank you very much, sir. Sorry if I have exceeded my limits. Shivanand bhai. जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और कार्यक्रम में हम आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक सम्मानीय श्री पाओलियन लाल जी, वो कार्यक्रम में अपनी बात रखें। स्वागत है सर, प्लीज। Thank you, Shivanand ji. Thank you all for organizing this meeting, and I've heard Praveen Patel ji elaborating the situation in Manipur. I would say most accurately. Thank him for his interest in resolving the problem in Manipur. Our discussion is entitled The Causes and the Remedies. Now, as I have been saying and maintaining, the root cause of the problem in Manipur, the violence, is an outcome of long-standing and systematic denial of rights that have been guaranteed under the Constitution to the tribal communities. The flare-up, of course, is limited between the Kukis and the majority Métis, but the underlying causes are much more, widespread, in the sense the entire tribal community in Manipur is aggrieved because the state has not respected the constitutional provisions for the rights of the tribals, whether it be in governance and whether it be in reservations in jobs, whether it be in the implementation of the Delimitation Commission's report of 2008, which recommended an increased percentage of representation of the tribals in the Legislative Assembly based on the increased percentage of their population. These are fundamental denials, and once the framework of governance, that is the Constitution, is neglected and bypassed or not allowed to operate, troubles are bound to come. And unless we start addressing that fundamental issue of respecting and upholding the Constitution of India and its provisions for various segments of its citizenry,
the problems will continue. And, there's a lot of talk about the land imbalance. On the face of it, yes, if you just look at the statistics, there seems to be some imbalance. I concede that because 54% of the valley population, the Métis, are living in what is about 10% of the territorial area of the state, that is the valley. But if you really look into it, that 10% has a carrying capacity which is almost 80 times the carrying capacity of the hill areas. And the population growth has been challenged in a way to create a narrative, a false narrative about illegal immigration from Myanmar and elsewhere. But the statistics don't prove anything of that sort. Statistics are also. The problem is when people in authority lose their integrity, and when people in authority don't respect the Constitution and started challenging the Constitution, then such problems, this kind of problems, are bound to occur. For instance, the Constitution of India provides that tribal land in tribal territories cannot be purchased by non-tribals. Now, that is a constitutional provision, but that has also been bypassed. It is not that it is observed. Now, over and above that, the present government and the entire politics of the dominant community in Manipur is to try and get access to the tribal territories. The demand for scheduled tribe status is also aimed at that. The false narrative of maligning the entire community as forest encroachers, poppy planters, drug traffickers, these are also aimed at, seizing their land under the pretext of the Indian Forest Act or the Wildlife Sanctuaries Act, etc. Now, the provisions of the Indian Constitution protecting the land of the tribals is based on a deep philosophical understanding of the inequalities that existed in India. The tribal communities have traditionally been deprived of access to economic opportunities. Their access to education is also very limited at the time of independence. So the framers of the Indian Constitution, particularly Dada Ambedkar, understood the challenges before the Indian state and its marginalized tribal communities. And it is with that deep understanding that a system of what we call positive discrimination was inserted in the provisions of the Constitution for social justice. Now, just because the majority community who are politically dominant want to satisfy their greed for the tribal land in a particular state, if we try to neglect the Samvidhan or the Constitution that governs us, that is the problem. And that is the root cause of the troubles in Manipur also. And
as far as the remedies are concerned, I have no doubt in my mind that unlike other rights situations in the country, this is a total separation, a demographic separation, geographical separation, and also, most importantly, an emotional separation that has happened. And therefore now, both segments of the citizenry, that is the Meitei community as well as the Kuki Joe community, must be allowed to be happily Indian by providing them separate administration, separate from each other, so that the misunderstandings, the misgivings can later on turn to good neighborly vibes. They can coexist as neighbors, but to try and integrate them again would be to try and force two people together into a bad marriage. That is my observation. Thank you. Shivanand ji, over जी, to you. हाँ, धन्यवाद पॉलियन लाल जी। और आपने मणिपुर के जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया और आपने उसके कारण और समाधान आपने बताए। और उम्मीद है कि आपकी बातों पर सरकार गौर करेगी और जो वर्तमान स्थिति निर्मित है उसको गंभीरता से लेगी। और आप तो खैर सत्ताधारी, मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी की सत्ता है। और मणिपुर में क्या स्थिति है, मतलब आपकी पार्टी की सरकार है, आप बीजेपी के वर्तमान एमएलए हैं, तो केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, तो उम्मीद है कि उसको गंभीरता से उनको लेना चाहिए कम से कम। देखिए सर, जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मतलब हाँ, ये सही है कि मणिपुर की सरकार बीजेपी का ही है, और मैं भी एक बीजेपी लेजिस्लेटर हूँ। लेकिन ये जो हिंसा हो रहा है, ये पार्टी पॉलिटिक्स इसके बीच में ले आना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये हिंसा जो है एथनिक है, पॉलिटिकल नहीं है, एथनिक वायलेंस है और एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है। तो इसमें पार्टी लाइंस में बोलना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, हमारा मतलब सर ये नहीं था कि मतलब पार्टी इसके लिए मतलब पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आपने जो बातें सुझाव आपने रखे हैं वो आप तो वो सुझाव अपनी पार्टी को भी पहुंचाते होंगे, क्योंकि केंद्र में भी वही है। तो एथनिक प्रॉब्लम पहले तो मणिपुर में इतनी नहीं थी, सडनली ये होने का मतलब इन सुझावों पर क्या उन्होंने अमल नहीं किया है, क्या हमारा ये कहना है? हाँ बिल्कुल, मैंने राज्य का बीजेपी का प्रेसिडेंट को भी लिखा था। ये था 3 मई की कुछ हफ्ते पहले मैंने लिखित में दिया कि ये जो हमारा सीएम है, ये एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होने के नाते जो एक कम्युनिटी के ऊपर जो नेगेटिव नैरेटिव्स दे रहा है और नेगेटिव एक्यूजेशंस कर रहा है और ब्रांडिंग कर रहा है। हो सकता है एक कम्युनिटी का मेंबर ड्रग ट्रैफिकर हो सकता है, लेकिन उस वजह से आप एंटायर कम्युनिटी ऑफ ड्रग ट्रैफिकर्स नहीं कह सकते। ये सब हमारा मुख्यमंत्री ने किया है, और these are concerns that the party needs to discuss in the party fora करके
मैंने स्टेट प्रेसिडेंट को भी लिखा था, लेकिन कुछ पता नहीं कुछ एक्शन लेने की मोड में है कि नहीं, लेकिन before anything could be done by the state president also, the violence started off. And unfortunately, the violence was executed by two groups of radical militias that have been nurtured and ओके, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और एमएलए साहब का कट गया यहाँ पर कनेक्शन। और आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सुश्री मारिया मांगटे जी हैं, जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जनरल सेक्रेटरी हैं और वो प्रेसिडेंट हैं ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी की। और जैसा कि हमने पहले उनको इंट्रोड्यूस किया, 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो हम सभी उनका स्वागत करें और उन्हें हम आगे सुने। मारिया जी, स्वागत है आपका। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। Hello, morning, and thank you very much. धन्यवाद। It really grieves me to tell the situation of Manipur, because it has been beyond, I don't know what to say. There is no words left, because it is really in a holocaust. After so many people have died, after so many people have been displaced, churches have been burned down, and many people homeless, and where women are being raped and killed, students left with no educational IDs to continue their studies. And still the state continued with violence, and the state-sponsored program continued to depend the division between the majority Meiteis and the minority Kuki-Jaumi. But the government have failed to do anything for the people who have lost everything. And the tribal people are left to fend for themselves. So I would like to say that the Kukis are Christians, God-fearing, and want to live in peace and with respect and dignity. Maria, sorry, intervening. Can you speak in Hindi? Oh no, I think English is better for Most me. of the people here not comfortable with English. Okay, so I'll try my best, but please. But it will be tutta-putta Hindi, no? Yeah. Mix Hindi, English together, and also put your video on. मैं क्या बताऊं? Try to interrupt. I think, ma'am, what will be the comfortable language you can use so that I can really understand your thoughts. I think you will be better express your thoughts in English. I would prefer English. Sure. I think कोई दिक्कत no issue, नहीं। प्रवीण सर, उसको थोड़ा सा आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। यदि मैडम को उतना कंफर्ट नहीं है हिंदी के साथ में, तो क्योंकि जो एक्सप्रेशन है जो आप कहना चाह रही हैं, यदि वो बेहतर ढंग से नहीं आ पाया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप इंग्लिश में ही कंटिन्यू करें जो चीज आप कहना चाह रही हैं, प्लीज। Okay, Maria, you got the license. Yeah, thank you so much. So now the state-sponsored program continues to deepen the division between the majority Meiteis and the minority tribal Kuki-Jaumis. But the government has failed to do till today, even after the Home Minister have visited the state. And even the Prime Minister of India just kept mum. Instead of looking into these problems, he's traveling around the world like like holidaying for himself. And now the President of India as the head also just kept silent, just being a good spectator. I just don't understand what is happening. And as for the Kuki people, Kukis are Christians and they are God-fearing people, and they would like to live in peace and with respect and dignity. And in this present situation,
the Kuki Zomi can never live with this Meitei plain people because of the situation they have created, which is really very bad. And this is beyond expectation, and the whole world knows it, and it is not a lie. But still they can manipulate, lying and fabricating all the stories, and to the extent of defying their own modesty. So now the best solution for the people right now in Manipur, for the Kuki Zomi, would be a separate administration, because they are not asking for a separate state like Jharkhand, Chhattisgarh, or Uttarakhand, or Punjab. So I think it is not a difficult thing. But if today the government is silent, I have a doubt if it is something to do with the central government who have instigated with the ideology of Hindustva. So I really don't understand. So today in this situation, people are not speaking out, but I have a doubt because for fear, because it is a BJP government and backed by the RSS, and also so many factors which I cannot explain. But in this situation, I really cannot understand what our PM is doing and what the Home Minister is doing after visiting Manipur. And he have seen with his naked eyes the dying people and the houses which have been turned to ashes, and how many lives have gone, and how many homes are burned down, and how many people are left rendered homeless. He have seen it with his own naked eyes, and still he have not done anything. So I really don't understand. But I'm thankful to Praveen and your organization. I hope something can be done through you with the fast justice, as you are fighting for fast justice for the country. And so today what I would like to say is that the best thing is to bring a solution for the state in Manipur. Is not much. Just one sentence is sufficient to give them a separate administration, which will be very good for them to live side by side, peacefully and cordially. So that would be the best solution. No need to look for peace committee or that committee, because this will only create more problem and prolong the problem. So this is all what I have to say, because I don't have to narrate anything more, because it is already known. The world knows it. Everybody knows it. So this is what I have to say in brief. Thank you so much. जी मारिया जी, धन्यवाद। आपने मणिपुर की समस्या के विषय में अपना पक्ष रखा, और जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, कुकीज समूह जो हैं, उनके विषय में आपने बताया कि किस तरह से वो भी प्रताड़ना का एक तरह से शिकार हो रहे हैं। हालांकि सभी लोग हो रहे हैं, क्योंकि वायलेंस जब होता है पूरी स्टेट में तो एक तरह से सभी को प्रभावित करता है, पूरा देश ही प्रभावित हो रहा है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो अल्पसंख्यक ग्रुप होता है उस पर प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज़्यादा इस तरह से बैलेंस हो जाए। तो आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति महोदय सभी उसमें इंटरेस्ट लें, और क्या कर रहे हैं वो अपना काम मतलब इसमें करें, इसको रिजॉल्व करें मामले को। और आपने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से होम मिनिस्टर ने भी वहाँ पर विजिट किया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान उसका सार्थक नहीं निकल पाया है, जिससे ये जो हिंसा है उस पर रोक लग पाए। तो ये सब कंसर्न आपने अपनी रखी है, और आपने कहा कि पूरे समुदाय को, सभी लोगों को एक दूसरे के साथ में मिल करके शांतिपूर्वक, सद्भावपूर्वक रहना चाहिए, और ऐसा वातावरण सरकार और जिम्मेदारों के द्वारा बनाया जाए। उसको एक तरह से उसपे आग में घी का काम ना किया जाए इस तरह से, बल्कि उसको रिजॉल्व किया जाए। इस तरह से आपने अपनी बात रखी है, और कार्यक्रम में अपन आगे बढ़ें। और हमारे अगले जो स्पीकर्स हैं डॉक्टर रॉबिन रामी जी, हम उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं। वो हमारे कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आप PhD ह्यूमैनिटी से हैं, जर्मनी से। आप मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड आप प्राप्त कर चुके हैं, और आपने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पीस काउंसिल के लिए भी आप काम कर चुके हैं। कई सारे पहले भी कार्यक्रम में आए हैं प्रवीण जी के साथ में। तो रामी जी, आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज अपनी बात रखें।
आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। शिवानंद भाई तब तक हाँ कांग्रेस आपसे पास जाइए, मैं उनको फोन करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए और अपन आगे अगले स्पीकर की तरफ चलते हैं। तो हमारे बीच में अपोस्टल एनजे कोंघे जी हैं, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं जेरूसलम ग्लोबल मिनिस्ट्री के, जो नागालैंड यूनिट में आप काम कर रहे हैं। और जिस तरह से I हमने think so. आपको Robin is back. He can first go. Yes, please unmute. Yeah, ओके Mr. Robin, हाँ जी, unmute रॉबिन your. रॉबिन जी वापस आ चुके हैं, तो वो अपनी बात रखें, इसके बाद हम अपोस्टल जी के पास में आते हैं। प्रणाम। आप लोग बाकी हमारे जो साथी हैं अपने आप को म्यूट करके रखें, क्योंकि आप लोगों की नॉइज डिस्टर्ब करती है। हमने आप लोगों को परमिशन दे रखी है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भी बीच में पूछ सकते हैं, लेकिन मतलब जब एक पार्टिसिपेंट्स का कार्यक्रम समाप्त हो जाए तब आप लोग करें ऐसा। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें आप लोग। इंजीनियर साहब और मनकांत जी, ओके म्यूट कर लें, सॉरी। तो राउमी जी प्लीज। Okay, pranam to everyone, and Shivanand ji, thank you. Thank you for this opportunity. And I would like to just thank you to Pravin ji, National Federation of Society for Fast Justice. And I'm so glad to have Maria ji, President of Northeast India Adivasi Vikas Parishad. And also, I'm so glad to have Sri Pautinlal Haukip, our BJP MLA, Manipur State Assembly. And also, here we have our Apostle N.G. Gonghe. And so, today, I would like to just, say thank you for these two groups, National Federation of Societies for Fast Justice and the RTI, Revolutionary Group, India. So here we see, now we have seen the briefing of what, extreme disorder counts and the, violence flare up on 3rd May in Manipur. And this is what today people of Manipur are facing the, having the troublous time. And I have visited in Kuki areas as well as in Métis in the relief camp, and then see the pains that they're going through. These are these innocent peoples. We cannot blame to either one, like, the innocent people, the public. The first, like, whether it be Métis or cookies, but we have to look, when we look at the background of Manipur, when we look at the background of Manipur, and then, we have seen, we have heard in the past, राउमी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। हमने परमिशन वापस ले लिया लोगों से, क्योंकि नॉइज क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आप हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लें। और हाँ ठीक है, hello, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। are you hearing? हाँ अब आ रही है जी। Yeah, I'm so thankful to all of you for this time. And the issues that we're facing at present in Manipur, the extreme disorders, chaos, and violence flare up on 3rd May. This is something very, very sad to hear. You sad to see practically, and then
this has never been done in the past history of Manipur, and many people from, even from Manipur Meitei community, the Christian community itself, and the Kuki, Joe, Chinjo, Kuki, all these groups. These are the two major groups there where they flare up, and then as our MLA has already said, this is something very, very difficult to explain in details. What is the root cause and why it happened? What are the remedies, the cause? Something, when we look into it, in Manipur, majority, I mean, one of the biggest insurgent group we can just, the largest numbers of insurgent group are in Manipur, whether it be Meiteis, whether it be Bukis, or whether it be Nagas. So when we look into it, there are, there is always a particular region for setting up this revolutionary, because it doesn't, when the government does not meet their needs, automatically they will start up with some kind of demands. And so if the demand is not being met, then ultimately they have to set up, they have to form a group of people. It is not against, against what we call, they're not trying to hurt someone, but in order to meet their needs, in order to meet their demands, this is how it has been set up. And so looking to that, now the situation in Manipur has been, it's been a very, very sad story. And in the past, Meiteis and Pangals, this Pangal, they fought, and Nagas and Kukis fought because of misunderstanding. And now this is one of the, as Maria says, Holocaust, something horrible situation between the Meiteis and the Kukis, Chin Mizo. So this is one of the major issues that in the purpose, the intent of having these issues. If I explain into it, I cannot explain in one point, because there are various reasons where one person have one point and another person has another point, and then when it put up together, it just flare up. Altogether. But taking this into consideration, in various corner, to bring up these issues, to flare up these issues, they have put up different issues in order to convince, in order that the public will not blame into it. So there are some issues where but after all, people should not have a misunderstanding about this, about Manipur situation. We have actually, before the statehood of Manipur, everybody knows, during the union territory, during that time on, Manipur has been given two separate bodies. We call that hill and the valley. And this hill and the valley, we should be having, for the hill and the valleys together, chief secretary with one, what governor, and then chief minister. We are not trying to say here about separate state, but Manipur is Manipur. Within the jurisdiction, within this Manipur jurisdiction, what people has their mind is, the hill and the valley. This concept has major issues that has been facing in the past. So this has been continued, and recently, from the Hill Area Committee, they put up a proposal called ADC bills, 2021 bills, and then vehemently the majority political group, as I said, the state assembly
were not allowed to pass this bill, and because of that, even a lot of issues have been taken place. Even in the past, in 2015, another problems flare up in Churachandpur, where 9 of the innocent were killed, and this is because of this inner line permits, and then at MLR 7 amendment bills and other things, three issues, three bills because of that. So something like that during Congress rules, Congress government, even that time they have that problem, and now another come up, another during, this time, BJP under the leadership of N. Biren Singh, our Chief Minister. So these issues come up, and then, this is not a new issues that everyone is looking for. You see the condition, why it is happening, and why people are not happy. And even though anything's come up, as Pravinji said before, central government, the state government has not been announced for helping, assistance, and all. But he has already officially announced. But to my understanding, I think that helping building their burn house, and then giving compensation to the dead, and all this will not bring solution to the problems, because you see the condition, and condition in Manipur, what is happening. You see the lifestyle in the hills, you see the lifestyle in the valley. Everything, all the national infrastructures, world-class infrastructures are already in Imphal Valley within this. And then, as I said, even though Manipur Meiteis are these valleys are covering only 10%, but this 10% is far valuable than the hills. And I know for sure, even we allow the hill people, valley people to move up to valley hills, they will not even willing to go and settle there, because the hill, there is nothing there. Who will go there? Even the hill people, when the infrastructure, the hospital, everything is there, then everyone rush there, and all the fund allocation has been installed. Majority of the fund allocation has been placed in valley. So including the hills, everyone rush because they want safety, they want secure life. And you see, most of the people in the hill who live, like, forget about 40%, just like 60% of the people who are living in the far-flung jungle in a village, they are not access to these kind of facilities. And many people, how many people died? Just forget about others, but since 1972, and counting till today, how many people have already died because of lack of facilities? And you see, the condition of what, the name, the project is already in the online. When we check into it, everything is there, but there is no proper implementation. And so this one we cannot even blame to only Meiteis, and we cannot only blame to Meiteis, because even the hills leaders, as well, both, there are some manipulation and then we cannot blame to anyone. So this is one of the problem that has been facing between the hill and the valley. So when we look into all this scenario, to both end, we cannot blame, and we cannot blame the Meiteis or the Kukis, because these people, the publics are the innocent. We have to help to both ends. But look at this. Look at the leader. What kind of leaders are coming up, and how they are leading, and how they are misguiding the public. This has to look into it. That is one point. And another point is, like, if we really want to bring solution to the problem, to these mayhems in Manipur, I cannot specifically say this is going to be the truth, but to my experience and to my observation,
when reading the hearts of various people and their demands, through that, if we give some, if we come to that conclusion according to their demands, some solution will be coming. Otherwise, and on other side also, we can see we cannot, whatever the people demands, whatever any groups demands, we cannot give to everyone, whether it is good or bad, according to demand, because that is also another things that we have to see the pros and cons, and we have to see. So when we compare to all this together, I think if we give the demands of the Meiteis, allow them, because even though we don't give automatically politically they are majority, 40:20 is something, it's any kind of a bill they can pass, and we see Hill people has been suffering for so many years. So this has to be looked into consideration. And on the other side, when we look into it, people, even cookies are demanding about separate administrations. There is a big question about what do you mean by separate administration? It has to translate into where everybody can understand it. In the sense, now this has to take into consideration with what Meitei will agree and what cookies will agree and what Nagas will agree. So these are the major three groups where we have to see their convenience also. But when we look into it all together, I think Meitei will not agree with what cookies are demanding, and cookie will not be happy with what Meiteis are demanding. So this is not, Nagas. So altogether, we have to see, we have to at least adjust from either corner, and then we have to see what best we can do for bringing peace and stability in the state of Manipur. This is what, to my observation now, because the facilities, everything is in the valley, so even the Nagas and the Meiteis, everyone rush into in the valley, and now it is overcrowded, and it hurt their sentiment, because before it was, this is valley, but now it is filled with hills people. And another concept, we cannot evidently prove, but there are some kind of imaginations, or there are some that kind of fearing that is going to come up. They think when these Meiteis give the ST status, they will hold our land, and then they will occupy whatever the things, and then they will occupy even the job facilities, even the ST quotas which has been getting from the state. And then another fear from the hillside is, this is what, and if these people like in Karnataka, because the hill people are majority, Christian, majority of hill people are Christian, and then this majority of the valleys are the Hindu. So maybe some Christian are just thinking, maybe if this kind of things come up, then things can be escalated to a different situation where it will even hurt the sentiment of the Christian values. That's what they think it. And then anytime state government, the majority of the assembly can pass any bills, even they may be able to cut off their facilities that has been getting by from the tribals. So that kind of bills can be passed. That's some of the suspicion. It is not happening, but it may, in the future, it may happen.
something that kind of fears are there. And then not only that, you know, hill people, once they are giving this opportunity, then you know, all the hills areas, they may not be willing to live in a hill, but they will invite the central government and the center, you know, corporates to bring all the world-class infrastructures to occupy the tribal land, so that, you know, later on our land will go away. There are some kind of, you know, fears. I cannot just this is just a fear from various people, because I cannot explain in detail all this, and then I cannot give a proof of what really they're having, because this is just to various people, various group of people, they have scare. So Please we have conclude, to Rovi. have to be separate. Yes, we have to be separate in the hill and valley. This will bring solution, and then for this, valley will not agree with what the hills are demanding. But if we want to bring peace and stability in the state, I think this has to at least come out. This has to at least come out, and then within even within the valleys, you know, there are a lot of innocent people. The innocent people, they are struggling like the hill people. So both and everyone is suffering, but only some bunch of people are just you know, enjoying the facility, of course, because they're running the state, and you know, the leaders keep changing, but whatever the leaders come up, so this is how it's fancy. So to my suggestion for the remedies and the solution to the problems, I think we need to give you know, free access to what Meitei are demanding. What's their demand? Let them do it. And then for even for hill people, and especially the Chin, Kuki, even this separate administration, in the sense, like, you know, even it has to have a mutual understanding with Naga and the Kukis, like at least the separate administration, in sense, Kuki, Nagas, Meiteis, this allocation from the center, if it is been allocated from the center separately, and then do their let them do on their according to their wishes, and then only I think some of the solution will bring to the problem, because this will last problem to the solution. Otherwise, even though we give compensation for the timing and reconcile each other and live together, it will not bring solution, because tomorrow another you know, a war will start again, another problem will create, because it doesn't meet the needs of the public. Unless we meet the needs of the public, this problem will always continue. It has been continuing, and it will continue again. So to this, I think state government cannot do much of it, because of course from the assembly they can set up something and decide it. But for the hill and the valleys, central government has already given. But the problem is with the state government, where they don't pass the bill and allow to access the you know, what has been given by the central government. So this is another problem. So in order to bring this to have the peace and stability in the region, I think we have to come up with this solution. Then only permanent solution will bring. So thank you. I know I might have, you know, go into a, you know, my own imagination, and then, you know, keep telling, but you know, this is one of the things that I have been, just to my experience, I have been observing. Otherwise, another new groups of insurgents may come up. Still, it may come up. We have already enough numbers of insurgent group from these three groups. But if we don't bring this, it may not come up. It may come up again. We are afraid of what is. Just continue to focus on this, and then I would like to just appeal to National Federations of Societies for Fast Justice, and then RTI group, revolutionary group, to just
take into considerations of what their publics, what the Manipur people's demands, not the leaders' wish, but the public's wish. How much the publics are suffering, how much they have been suffering, and then how long it will go. So in order to solve the problems, we have to meet the needs of the public. Then only, I think, solution will the solution to the problem will come into exist. And so that is one thing. And then another thing now, as you have seen, it is about demographic separation, geographical separation, and emotional separation, you know, as our honorable MLA has already said. This is something we have to look into it now. To live together with Métis and Kukis, the Chin Mizo Kukis, it is impossible. Even though the government has set up and do things, it is difficult to live together now. But the government and the central government has to consider bring something which is applicable, accessible to both the communities, so that, you know, we will live a peaceful, peace and harmony life. Otherwise, guns and fightings. And I appeal to both the groups, even either be Métis or Kukis. Why? Guns will not work. Please conclude. Yes, so guns, instead of fighting, let us sit together. Conclude. Yes, let us sit together and then discuss with it and bring those separate administration and other issues, how to work it, and then bring development, so that in Kampupi, in Churchandpur, in Senapati, and in other places in Health, they will have their own world-class institution, world-class hospital. Then automatically, peace will come into existence, and then not much people will rush to Imphal. No, now at present, everyone are rushing to Imphal for any problems, any health issues. So this will not happen again, because once the fund allocation has been given to separately, then automatically the problem will come solved. So this is my suggestion. Thank you, Pravinji, and all our Srivanji. I hand over to you again. Thank you. So जी धन्यवाद डॉक्टर राउमी जी, आपने अपने परिप्रेक्ष्य में जो भी आपने समझा, वहाँ की जो रियलिटी है, जो आपने समझा, जैसे जाना, उस तरह से आपने अपना व्यू यहाँ पर प्रकट किया है, और आपने समस्या के बारे में बताया और उसके समाधान के विषय में बताया, और किस तरह से जो हिल एरिया में रहने वाले कुकी समुदाय, जहाँ पे उनकी बहुतायत है, और इसी तरह से जो घाटी वाला जो एरिया है वैली का, वहाँ पर जो मैतेई समुदाय रहते हैं, जहाँ पर उनकी बहुतायत है, उनके अपने अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसके विषय में आपने बताया, और ये कहा कि सरकार को उन चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करने की आवश्यकता है। केंद्र ने जो उनको फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसको वो विचार करे। और साथ में आपने ये भी बताया कि इम्फाल का जो एरिया है, वैली एरिया, जहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा हैं इस समय, तो वहाँ पर सारे लोग जाते हैं स्वाभाविक तौर पर, जैसे हॉस्पिटल या कोई भी बात है, तो वही सारी व्यवस्थाएं दूसरी स्थान पर भी की जाए जहाँ डेवलपमेंट हो। फिर आपने ये भी कहा कि जो कारपोरेट है, कारपोरेट वर्ल्ड थोड़ा सा एक्टिव है, और वो कुछ जमीन लेकर के, चाहे वो डेवलपमेंट का ही कार्य हो, करना चाहता है, तो लोगों में थोड़ा सा अविश्वास हो जाता है कि पता नहीं क्या इनकी मंशा है, हमारी जमीन हड़प लेंगे, ये सारी चीजें तो ट्राइबल एरिया में तो स्वाभाविक तौर पर होता है। तो इस चीज को भी विश्वास में लेकर काम करने की जरूरत है। आपने ये सारी बातें हमने बताई, और समस्याओं के एक रीजनेबल समाधान के विषय में मतलब आपने अपनी बात रखी है। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़े, और हमारे बीच में अपोस्टल एनजे कोंगे जी हैं, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं जेरूसलम ग्लोबल मिनिस्ट्री नागालैंड यूनिट के, जो हमें अपने इस कार्यक्रम में अपनी बात वो रखेंगे। वो इस पूरी समस्या को किस तरह से देखते हैं और उसका कैसा समाधान पाते हैं, वो अपनी बात बताएंगे। अपोस्टल जी, स्वागत है आपका।
Hello, everyone. Thanks to God for today is a beautiful day. And thanks to our hosts and Sir Pravinji, Shiraji, and then all our honorable MLA and ma'am, Maria, for your insight. Actually, I was shocked and saddened by them, even though I was praying to God, because India being a biggest democracy in the world, and still we are not honoring one another. That is the biggest issue. And I think so it's not because of anything that's wrong, but it's because of our leadership, the mindset of the leadership. That is, it went wrong. Because looking back to the history of India, we, Northeast India, especially Nagaland and Manipur, the Naga Hills, you know, we have been divided, we have been ruled, and especially our Northeast India is mostly comprised of Christianity. And right now, when any Indian comes, any Hindu comes to Nagaland or any parts of hill area, we never discriminate anyone so far. We have not records that we insulted other religion. But I feel this is a religious issue, because the game behind the devil, everyone hates, every religion hates the devil, and nobody is a partner with the devil. So in this world, we are created by God. God created us, whether any religion you believe. But I believe there is a creator who created me, who created the land, who created the sea, oceans, everything. So I believe even India getting independence was not because of violence, it's because of non-violence. I believe Mahatma Gandhi, the father of nation, he always said, if, even to the Nagas, he said, if any any Naga is to be, if any Naga is to take a bullet, he will be the first one to take the bullet from the Indians. See, at times, we think, India thinks that we are unsafe. In Nagaland and in the hill of Nagas, every Naga, there is a church where we pray. We, Jerusalem Global Ministry, God has given us the prayer life. We need to pray. I don't think so any religion teach us to kill, to murder, to steal, you know. I don't think so any religion does that. But the governance in the history of the world, even in the history of mankind, they were also conquering land and, you know, all this. But in this generation, is a generation where the world has replaced AI, artificial intelligence, where science, technology, everything is advancing. Even spirituality is also advancing in our generation. So I believe it's not the time to start, you know, like disrespecting other religion, burning down churches. You know, it's not the church in Christian, a true Christian leader or a true Christian never tell his followers, or a pastor or apostle never tell somebody to go and murder somebody. The Christian, the Bible does say, thou should not kill, you know. So it is also something we are protecting. That's why I thank the, you know, the organizing committee, that especially our sir, they have chosen this time, National Federation and Societies of Fast Justice. You know, everybody needs a, you know, fast move, as the world is moving so fast. And I believe one thing we need is a mutual respect. Both the Meiteis and the Zhao Kuki Ching tribe, they need mutual respect. And it depends on the leaders. During the time of even our Tangkhul Congress government, he was the chief minister of Manipur. We Nagas are allowed to buy land in the valleys and all things. And then I was brought up in, born in the foothill of Imphal. Our village is comprised of the forest of Imphal. See, at times when we start thinking all this, we need to respect each other, because we are all created by God. We are not created by ourselves. We are not machines or robots. We are created by God. We have to live a life of mutual respect, protection. We need to protect one another. We need to protect the cause
of our right. Everyone has a right, and also human rights. We need to respect that. I believe if the leaders, and then you cannot later on, before Sir Pravin said, how many thousands of guns were snatched from the police post and then used. See, sometimes it is the leadership governance. So I believe it is not, I'm not blaming BJP or RSS. I'm blaming the mindset. The devil is using the leaders to deceive their mind. So I believe in a Bible, in what I believe is the word of God, because I was also an atheist. I don't believe God before. But when I read, there is only one way, that is God is love. Teach us God is love. We need to love one another. I think so, love, forgiveness. When I was ministering to the cookies in the refugee camp in Kampokpi area recently, just a few days ago with Dr. Robin, I told them, you know, Jesus taught one thing: love your enemies and do good for those who persecute you. Forgive them, pray for them. So I don't believe that, why should Christian be, insulted and then persecuted, deprived in our nation called India, where it is a democratic country. Sometimes I feel that now the world, and it's not a big issue now, the world is going to intervene. Everyone, the Europe Union is going to intervene. They're saying we need to help, because there was a proposal I read in an article recently. Just I'll read for all of us. It is in the World News. Therefore, we urged, while the Manipur tribal forums plead to protect for the Kuki tribe by the Indian Army has been rejected by the Supreme Court. Something fishy is going on. Not about, see, the Kukis, the Meiteis, they're lovable people. The Nagas are always truthful. We love each other. We live Meiteis and we live together. Even the Kuki, I have Kuki classmates. I have Meiteis friends. I have lots of friends around. If I'm right, if I'm honest, if I'm generous, I believe we live in harmony. The ideology of our country has to change. See, even the Supreme Court is rejecting the plea for protecting the Kuki people. So I believe the EU and the member states should collaborate with like-minded countries and organize and access possible further steps to continue the race of human rights, especially religious freedom. Religious freedom is very important. I believe we need to respect each other's freedom of religion. That is what the country has been created. Second point, I want to come to forgive. To forgive, and also maybe the central government, Prime Minister Narendra Modi has to take the decision. It is not about the parliament to take the decision. It's about the Prime Minister to take the decision. The word, or else even the ambassador of US said that they will intervene if asked help. So I believe it's high time for us, even our Nagas, we have been struggling, our peace talk, even our Naga talks, because of the integrity. We cannot break the integrity of Manipur. Oh, now Manipur is already broken. Who is breaking? Because of our attitude. As human beings, we need to respect. When I was in Delhi University, when I was in Mumbai, when I was in different parts of the country, we had good friends. We had even Hindu friends, Punjabis, Sikh, everyone, Malwaris. We are good business people. We have mutual understanding. But I believe it is high time for us to wake up India, to wake up a righteous government, to wake up justice to everyone. I believe it's not about religion. It's about love and humanity. It's about freedom. It's about knowing one another, understanding one another, respecting. I believe even though there is a peace community, peace mission committee, I believe it should be of different religion, different parties, think tanks, and also to propose to the government in the center to ask to give the right decision, because right now Manipur or any parts of India is under the central government. But I believe it is the opposition, the Congress, maybe anyone, maybe they should all come and support this cause.
especially when Rahul Gandhi came also, though he was stopped. But I believe it's not, it's attitudes. So I believe we should not use force in our generation. God created this world to live in peace, joy, love, knowing each other and respecting each other. I think so. This type of clashes, and even I believe there was an article by the RSS to bring peace in Manipur. Yeah, we respect, we honor each other. As a spiritual man in our nation, I also want to honor every religion. Doesn't matter whether he's Buddhist, Catholic, or Protestant, or but then I believe that everyone is created by God, and we need to glorify His name. I support this RTI, and also National Federation Society for Fast Justice to pray and go ahead. I believe in the Word of God, which I believe the Bible says that the king's heart is even in the hand of God. So I believe it is a high time. Your courage, Pravinji sir, we are supporting in prayers, and thank you so much for this wonderful time. Shalom. धन्यवाद अपोस्टल साहब, आपने बिल्कुल शांति का संदेश यहाँ पर दिया है लोगों को, और उम्मीद है कि ये संदेश आपका जो है वो सरकार तक पहुंचेगा, और प्रवीण जी इसको निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। शांति, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम का जो संदेश आपने दिया है, अच्छी बात है। और अब ये है कि ये सब पॉलिटिकली कभी कभी मोटिवेटेड होता है, लोगों का अपना कोई वो नहीं होता, जिस तरह से लगभग सभी स्पीकर्स ने कहा कि लोग तो सब एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हों, पर जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो इधर उधर थोड़ा सा खुराफात करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उठापटक इस तरह से चलती रहती है, और इसमें एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत है। सही कहा पिछले भी हमारे वक्ता ने कि लीडर्स महत्वपूर्ण होते हैं, और लीडर्स क्या कर रहे हैं वो उनको देखना चाहिए। तो हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से मामले को एक रास्ता उसका निकाला जाना अति आवश्यक है। और इस पर निश्चित तौर पर जो मणिपुर सरकार, भारत सरकार है, उसको चाहिए कि वो इस विषय पर अपना स्पष्ट करे। और ये हिंसा बिल्कुल जायज नहीं है। हमारे इतने अच्छे से देश में, जहाँ गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे लोगों की हमारी ये धरती है, जहाँ पर सब इतना अच्छा कल्चर है, और वहाँ पर ये सब अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि इस पर निश्चित तौर पर सरकार जल्द ही उसको एक्शन लेना चाहिए। तो प्रवीण जी, हमें लगता है कि कार्यक्रम में कुछ प्रश्न ले लिए जाए, टाइम भी खत्म हो गया है, तो फिर अगली RTI DP बिल, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उस पर चर्चा की जाए। आप कुछ अपनी बात जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज। किसी को सवाल हो इनसे तो ये कर ले। आप लोगों का किसी का सवाल है? सॉरी, हम आप लोगों को अनम्यूट कर देते हैं, क्या कहते हैं आप अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ। आप लोग सब अपनी बात अनम्यूट करके आप रख सकते हैं। स्वयं आप लोग अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, या कि हैंड रेज आप ऑप्शन चूज कर लें, तो शायद हम आपको उसमें से कॉल कर सकें और आप अपनी बात रख पाएं। हैंड रेज का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या कि आप सीधे अपनी बात रख सकते हैं। जो भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, हालांकि हमें लगता है कि आपके ग्रुप के कुछ लोग हैं प्रवीण जी, तो उनको आप बाय नेम कॉल कर सकते हैं। RTI से जुड़े हुए जो लोग थे, हमें लगता है कि वो ज्यादातर RTI के ही मामलों पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कम उम्मीद लग रही है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, आप यदि कुछ लोगों का नाम कॉल करना चाह रहे हैं तो। नहीं, किसी को सब प्रश्न हो सभी सामने से आएंगे। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, जो बात सबकी सुनी है, तो स्पेसिफिकली मारिया जी, डॉक्टर रॉबिन एंड एपोस्टल कॉन्ग है, अब तीनों की बातें हमने जो सुनी है। सोलंकी जी हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? Pardon? Yes, there are two questions. Please go ahead. शिवानंद जी, 2 हाथ उठे हुए हैं। Hello, can I ask? Please go ahead. Oh, नाम okay, पहले thank बता you. दीजिए।
Myself, Dr. Dhiren Misra. I'm a psychiatrist. I have listening all the discussion and thoughts are represented by the eminent speakers. And as we are talk about the human behavior and human psychology, they always try to represent anywhere in a kind of identity politics. I am a Hindu, I am in a certain communities, I am belong to this area. And this is a basic human tendency, and it's found in everywhere. I am looking, I am not belonging to Manipur. I have never visited Manipur, but in general, what is represented and what I have read in papers, newspapers, I have seen it as these ethnic classes like control over the resources. After the High Court judgment, the certain committee is declared an SC status, and they thought that their SC status is snatches our rights and snatches our resources, what they are occupied by the different committees. And this the fight of resources, somehow can labeled as a fight of resources. And between the fight of for the fight of resources between the two committees, the some other external factor also have vested interest, and they are try to propagate those classes. Like दो committees हैं जो आपस में somehow resources के लिए, उस state की resources के लिए fight कर रहे हैं, क्योंकि एक certain committees को एक अलग status दे दिया गया है कि यार they are belong to SC category, वो majority में है, और they all are already belong to some better position than other committees. और जो दोनों बीच की committees के बीच में जो resources को लेके fight है, उस fight में some other external factors like corporate world or some external agencies outside the India or whatever their interest, they put their they मतलब तो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को, फंडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं या इस चीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं. और जैसे मैंने रिस्पेक्ट एमएलए सर एंड मारिया मार्गेट, they all are, they given a logic, they given a like a solution to separate administration. I don't able to understand what it means like separate administration in the same geographical area. The plain people are administered by some different government, and hilly people are some different government. And then if this will be going on, then it will be more classes for like blockade and everything is top में कुछ भी जाना है तो प्लेन से होके ही ऊपर जाएगा. Whatever resources आपके हैं, whatever transportation है, different kind of blockades नीचे लग सकते हैं. There are lot of issues. So I don't think like this kind of solution will be feasible for long term. Short solution तो ये हो सकता है, but लंबे समय के लिए solution. Please, may I answer, Mr. Konghe and Robin? See, actually, if you know the history of Northeast, especially Nagaland and Manipur. Please be brief, huh? Yeah, and then we need the governance. Even why Naga political issues are still on peace talk. One point is that we honor each other, we respect each other. We are in India right now, but the attitudes. It matters of the attitudes. It's not about anything. It's about attitudes and the governance. So I believe if you want more to know, I believe you need to know why these two things, why the scheduled tribe and scheduled caste, why there is different. Every man has a right, human right. Everyone has a right, but the right should be historical based. It should be appropriate. It should not revoke anyone, and it should have their own freedom to practice. Thank you, sir. Yeah. Robin, would like to add? Very brief. No, okay, thank you. Thank you. Your voice is not coming out. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Not hearing. Okay, thank you, sir. The apostles are messages. It's a basic about the history and what they belong from the different committees. Thank you. Thank you. I can understand. Yeah. Anyway, Robin, you mute yourself. I'm just concluding about this gentleman's question. डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारे कार्यक्रम में कई बार आ चुके हैं, और आप स्वागत है. डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ने भी जो प्रश्न पूछा है, और वो मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो इन चीजों को वो एक अलग एंगल से भी देखते हैं. बहुत अच्छा उनका प्रश्न था. नहीं, ठीक है, मैं उसको थोड़ा उनको जवाब देना चाहूंगा. शिवानंद भाई,
जी I would just like to have some comment on जो उनके बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। सवाल आता है कि आज जो चीजें मणिपुर में हो रही है, क्या ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुई थी? बस्तर के अंदर क्या हुआ था? सलवा जुडुम के नाम से जो चीज हुआ था, उसको आप देखिए, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन व्हाट हैपेंड इन सलवा जुडुम एंड व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर। सलवा जुडुम की बात कर रहा हूँ मैं, 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4 जून 2005 और 5 जून 2005। 4 जून 2005 को एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ में एमओयू सरकार ने साइन किया फॉर ए स्टील प्लांट इन बस्तर, इंक्लूडिंग सो मेनी माइनिंग, दिस थिंग दैट थिंग एंड ऑल। और उसी दिन में 11 बजे सलवा जुडुम की मीटिंग हुई। सलवा जुडुम इज अ गोंडी वर्ड, उसका मतलब है पीस अभियान, शांति का अभियान। एक्सेप्ट पीस देयर वाज नथिंग। 644 villages have been destroyed, 3.5 lakh people have been displaced. All those displaced were mostly tribals. कितने लोगों को मारा गया? Internally displaced persons. What is happening in Manipur is almost nearly same. कश्मीर के अंदर 370 हटाया गया। क्या हुआ? Big corporate house has taken possession of a big chunk of land. आज मणिपुर के अंदर में भी यही होना जा रहा है कि जहां पे कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट है, दे वांट टू हैव द मिनरल्स, और वो मिनरल आदिवासियों के पास राइट है। राइट को कैसे खत्म किया जाए, दिस इज वन साइड ऑफ स्टोरी जो हम अभी कहना नहीं चाहते थे, मगर जब हमारे फ्रेंड साइकिट्रिस्ट ने जो कहा, जो मनोवैज्ञानिक ने, तो मेरे को भी कहना पड़ा कि दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट एंड वी आर एक्सप्लोरिंग ऑन इट। हम उसको भी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। दैट टाइम विल से। आज भले चुप बैठे हुए हैं, मगर कल वो बाहर आएगा। थैंक यू सर। ओके सर, आपने कहा कि कारपोरेट का एक इंटरफेयर तमाम हो जाता है, चाहे वो कश्मीर हो या आपका मणिपुर के जो केस की आप बात कर रहे हैं उधर छत्तीसगढ़। और आजकल विकासवाद की जो अवधारणा है वो उसी पर तो आधारित है। आप विकास किसको कहते हैं? कारपोरेट आकर के विकास की डेफिनेशन कहेंगे मेरे को? व्हाट डू यू मीन बाय विकास? मैं ये कह रहा हूँ कि विकास की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन वर्तमान में जो विकास की डेफिनेशन है वो यही तो है। वो तो डेवलप्ड नेशन अमेरिका भी यही कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के देश भी यही कर रहे हैं। जहां जिसकी जितनी पावर है वो पहुंच करके यही तो कर रहे हैं, शोषण ही तो कर रहे हैं। उनकी कारपोरेट वर्ल्ड, मतलब उनकी कारपोरेट कंपनियां हैं, वो जाकर के वहां पे अपना इस्टेब्लिश कर दिया और वहां से निकालना अपना मिनरल्स चालू कर दिए। अफगानिस्तान में अमेरिका ने आकर के यही किया, मतलब 10 साल 15 साल जो भी उनका युद्ध यहाँ पे चलता रहा, मुझे पता नहीं टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स उनका रहा यहाँ पे, लेकिन लगभग 1 दशक से तो अधिक ही रहा। तो ये हर कंट्री वही कर रहा है। और मतलब ये है कि मणिपुर में भी यदि कारपोरेट आएगा, हाँ ये बात ही, और बात भी यही है कि मतलब जमीन तो उनको खरीदनी पड़ेगी, चाहे वो कश्मीर हो या मणिपुर हो। जमीन खरीदेंगे, जमीन खरीद करके वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, उनको जॉब देंगे, ये सारी चीजें तो आएगी। तो वो तो हमें लगता है कि जो वर्तमान जो 21वीं शताब्दी चल रही है वो विकास की पूरी तरह से अवधारणा ही इसी पर केंद्रित हुई है कि आप पूरे कंक्रीट का जंगल बनाइए। शिवानंद भाई, लेट मी ऐड 2 पॉइंट्स। आपने जो कहा उसी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। विकास की बात कर रहे हैं, विकास का मतलब ये नहीं है कि किसी को भिखारी बना दो और अपने को तिजोरी भरो। बस्तर की जो मैं बात किया था, आयरन ओर की पॉलिसी आपको मालूम है, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन क्या थी? आयरन ओर विच वाज एक्सपोर्टेड इन फॉरेन कंट्रीज और जिसकी रेवेन्यू हमको 8,000 रुपया प्रति टन मिल रही थी। रॉयल्टी कितनी सरकार को मिल रही थी? एवरेज रॉयल्टी रिसीव पर टन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज 11 रुपीज। 8,000 रुपया की चीज आप 11 रुपया में लुटवा दोगे और फिर बोलोगे कि भाई ये तो विकास है। ये विकास नहीं है, दिन दहाड़े डकैती है। तो विकास की परिभाषा जब करनी है तो आज हमको पूरे एक लंबे पर्सपेक्टिव में देखना होगा। आज के दिन में स्थिति यह है मणिपुर के अंदर कि वहां पे 2 कम्युनिटी को लड़ा दिया गया है, मैतेई और एंड दिस आदिवासी। ये दोनों होना भारी। हरीश सोलंकी जी अपने आप को म्यूट कर ली, म्यूट करके रखिए। सोलंकी जी, लेट हिम रेज द क्वेश्चन। मेरा क्या ये कहना है कि विकास के ऊपर एक चर्चा करें। लेट अस डिस्कस व्हाट इज विकास। विकास है कौन? देखिए प्रवीण जी, वो हम आप चर्चा कर रहे हैं सरकार और जो कारपोरेट वर्ल्ड। हमारा कहना ये नहीं था, हमारा ये कहना है कि भाई जो आजकल ताकतवर कारपोरेट है ना, सरकार को अपने कब्जे में लेकर के उनको चुनाव के लिए पैसे दे करके और उनकी तिजोरी भर करके वो वही कर रहे हैं जो उनकी इच्छा पड़ रही है। और ये यहाँ की, इसको तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म कह सकते हैं, विकास नहीं कह सकते। आज सुनिए, आज पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इसी पर बेस्ड है, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, हर जगह यही कर रहे हैं लोग। और हाँ, और यही कॉर्पोरेट चाहे तो हमारे लोगों को मारो।
और दूसरे नहीं, यही तो चल रहा है। और दूसरी बात, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हमारा पन्ना ले लीजिए। पन्ना मतलब हमें लगता है कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में हीरे की जो खदानें हैं सबसे ज्यादा पन्ना में है। पन्ने में आज भी आप चले जाइए, वहां के लोगों को देख लीजिए। पन्ना भूमि पन्ना वासियों की है। अब ये बहुत रीजनलिज्म की बात आ जाएगी, और ये आ जाएगा कि हम एक प्रदेश से हट करके एक जिले पर केंद्रित हो गए हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है। बात यहाँ भी तो यही चल रही है, चाहे मणिपुर की हो, चाहे आपकी कहीं की भी हो, बात तो यही चली ना कि उन लोगों नहीं को नहीं हुए वो ना मार के हो जाएगा कुछ नहीं। उनको फायदा दिए बिना, उन लोकेलिटी को, जो वहाँ के एथनिक लोग हैं, उनको फायदा दिए बिना वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस आप क्यों हड़प रहे हो? यही लड़ाई आपकी छत्तीसगढ़ में यही ज्यादातर है। हर जगह उड़ीसा में आदिवासियों की जो बातें की जाती हैं, वहाँ भी यही है कि भाई उनके जो लैंड है उनको आप लोगे, वहां से खनिज रिसोर्सेस आप लोगे, लेकिन उनको कुछ नहीं दोगे। यही चल रहा है। पन्ना में कुछ नहीं मिला। हीरे दुनिया में भेजे जा रहे हैं पन्ना के। पन्ना की स्थिति आज है कि सबसे बैकवर्ड एरिया पन्ना आज है। सिंगरौली में कोयले की खदानें हैं, लेकिन सिंगरौली आज मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। सबसे ज्यादा परेशान लोग वहां पे हैं। सबसे ज्यादा हमें लगता है कि बीमार हो रहे हैं इसी कोल माइंस की वजह से। तो ये सारी चीजें कौन जिम्मेदार है? भाई हर जगह यही तो चल रहा है। इस ऑर्डर को कैसे चेंज किया जाएगा? इसी को क्या विकास कहते हैं? आपने यही तो कहा विकास, ये क्या विकास है कि जहाँ लोग जीने की लड़ाई लड़े? सरकार का यही विकास है कि वो एक कंपनी को भेज दे हमारे जिले के सरकार का ये यदि पॉलिसी रहेगा तो लोगों के अंदर पॉलिसी होगी, विरोध होगा। यहाँ रीवा की बात करता हूँ। रीवा में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन के लिए यहाँ से बिजली जा रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि दिल्ली के मेट्रो के लोग, मतलब दिल्ली के लोग, मेट्रो के लोग या जाकर मेट्रो ट्रेन ना चढ़े, वहां को बिजली ना मिले। लेकिन बिजली का संकट यहाँ पे रीवा की आप देखिए। यहाँ पे इतने बड़े बड़े सोलर प्लांट है, एक और लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे किसानों को 24 घंटे में मात्र 6 से 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है। मतलब ये स्थिति है। आप बताइए ये क्या है? हमारे जमीन, हमारी जगह, और आप कहीं भी उसको, मतलब हम ये नहीं कहते हमारे देश के लोग हैं, फिर वो भाईचारा की बात आ जाती है, सारी चीज आती है। लेकिन किसी भी सरकार को ये तो देखना चाहिए कि जहां से, जिस जमीन से आप उस चीज को ले रहे हो, कम से कम उन लोगों को फुलफिल करो, इसके बाद दूसरे लोगों, मतलब दूसरी जगह पे दो। ये चीज एग्जैक्टली दैट इज द क्रक्स। उसी चीज की तो बात हो रही है कि आप जमीन के अंदर में पोजीशन लेना है, लीजिए, जब तो लीजिए। छत्तीसगढ़ की जो मैं बात कर रहा था, आपको लोहंडीगुड़ा के बारे में यदि आइडिया ना हो तो देखिए, 5th शेड्यूल एरिया होने के बावजूद पूरी ग्राम सभा को मैनिपुलेट किया गया, नकली कागजात बनाए गए। और जब पूरे सरकार को जब ये सब चीज दिए हैं, हमने नोटिस दिया है, तो पूरी की पूरी जमीन वापस करना पड़ा। और अभी वेदांत का मामले में आया, वेदांत के अंदर जगन्नाथपुरी के मंदिर की जमीन गलत तरीके से दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए और सरकार को जमीन रिटर्न करना पड़ा। तो गलत तरीके से जो कॉर्पोरेट और ये जो उद्योगपतियों के साथ में जो शासन में बैठे हुए लोगों का एक अनहोली नक्सस, जिसको कहें अपवित्र गठबंधन, ये उसके पीछे है। उसके बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि मैतेई क्यों लड़ रहे हैं, ये आपके आदिवासी क्यों लड़ रहे हैं, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है, कितने लोग मर गए हैं, क्या हुआ है। 3,000-4,000 हथियार पुलिस के यहाँ से, आर्मरी से लूट हो गई। कोई विश्वास करेगा? आपने लूट हो गई है या हथियार दिए हैं कि जाओ हथियार ले जाओ और मारो एक दूसरे को? तो दीज आर द इश्यूज, वेरी सीरियस इश्यूज। इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। Anyway, थैंक यू सर। थैंक यू सर। फाइनली आपने एक्सेप्ट किया कि इट्स मैटर ऑफ रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल होगा, किसका कंट्रोल नहीं होगा, एंड सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, इन फाइट दैट कि वो रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहते हैं। No, that is a subject that can be discussed. Yes sir, thank you sir. It is a huge subject. Okay, so thank you Praveen ji, and I will make one small thing, suggestion to all of us. हाँ देवेंद्र जी, अपनी बात रखिए आप अनम्यूट करके प्लीज, शॉर्ट में रखिए, फिर आरटीआई का सेशन आएगा, उसको वो करना है। मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए, मैं खुद छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूँ, इसलिए सीधी सी बात करूंगा। मुझे अगर थोड़ी सी जानकारी जो हम लोगों के पास फिल्टर होकर पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है, कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, कि पॉलिटिकल किसी को बेनिफिट होने वाला है, या फिर ये बाहरी देशों की कोई चालाकी है, बदमाशी है इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न करने की, या फिर ये कोई सामुदायिक परिस्थितियां है जिससे किसी विशेष समुदाय को विशेष लाभ की इच्छा है। तो इस पर थोड़ा सा स्पष्टता के साथ मैं जवाब चाहूंगा। सीधे सवाल है, सीधा जवाब चाहता हूं बस, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की स्थिति से वाकिफ हूं और क्या होता है इसके पीछे लॉजिक मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे सिर्फ इसी सवाल का जवाब चाहिए। सर सीधा सवाल। और रॉबिन, who will be answering?
Yes, I would like to just give one suggestion, 1 point, 1 or 2 point. Ask a question, you need to answer. Doctor, our psychiatrist, he asked a question about administration, separate administration. So Manipur has been, going without separate administration for long, since 1972 till today, and then, this is the reason why, people cannot meet their needs, public cannot meet their needs and their demands. That's why the ethnic crisis, ethnic cleansing is happening today. So this is one of the reasons, because everything is in the valley, and so everyone runs there, and so it is overcrowded, and most of the land are occupied by the hill peoples, and then the valleys together. And then not only that, point number 2, now majority are coming up when the hill people are coming up, and then a lot of bureaucrats posts and others ST quotas there are there. So this is one of the reason why, if we give them separate administration to develop themselves in their own district, in their own jurisdiction, I think that will bring solution to the problem. Otherwise, today, like today in the past, we have been this without separate administration. We have been living together for past many years, but it never happened, and the problem increasing one way or other way. So this is one of the things that we can put it together for the separate hill and the valley, and then with same government. I mean, the same government in the sense, governor, chief minister, they will rule the state, and there is no separate geographical boundary. But as we talk about this, emotional is about emotional and demographic, emotional separation. So to do this, to bring development to is one of their plays, then automatically I think the problem will subside. And this is the reason we need to focus on it. And then they should not, both the people, they should not fight each other. They should not fight each other. Stop fighting. Yes. Thank you. अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, आपका उत्तर यही है कि ये अलगाववाद का एक लड़ाई है, जिसमें एक स्टेट्स को टोटल वो हमारे देश से अलग करने की लड़ाई है, ऐसा है? No. We are not asking both parties are not asking a separate state from India. So sometimes to know the history एडमिनिस्ट्रेशंस तो उनके हाथ में आज भी सेपरेट्स है, आज भी जो पॉलिटिकल व्यू है वो खुद अपनी सरकार ला सकती है। Mizoram has its own separate administration. You heard know about the state of Mizoram? Have you heard about Mizoram? मतलब क्या have you heard about Mizoram? स्पेशल स्टेट्स घोषित करवाना चाहते हैं कुछ? Means there will be the chief secretaries. If separate administration means 2 chief secretaries appointed by the governor of India. तो ये स्टेट की मांग है, स्टेट में रहने वाले पब्लिक की मांग है कि इसमें बाहरी कंट्री के लोगों की लॉबी भी पॉसिबल है इसमें क्या बाहर से विदेशियों की that's why we are also, that's why India is afraid of, in the highest insurgency group, rebellious group are in the northeast part of India. सर क्लियर आप सवाल समझ चुके हैं, मैं क्लियर जवाब चाहता हूँ. That's why you are asking, we are not separating both the parties are not asking a separate country or separate thing. They are asking separate administration, autonomous. There is also Karbi Anglong. Karbi Anglong is a separate small tribe that has a separate autonomous council. They have the separate administration. I think local government प्रवीण सर आपका क्या व्यू है? मेरा देखिए, आपको एक तो गैर समझ है कि इन लोग कोई देश से अलग होना बात कर रहे हैं या मणिपुर की अंदर कुछ दूसरी व्यवस्था है. इनकी जो व्यवस्था है आदिवासियों के लिए एक काउंसिल चाहते हैं, सेपरेट मैनेजमेंट काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल. उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में है. छत्तीसगढ़ में आप देखिए बस्तर विकास प्राधिकरण क्या है, उड़ीसा में केबी के प्राधिकरण क्या है, बोडोलैंड आसाम के अंदर है बोडोलैंड. सुनिए पहले इतिहास से बात करने के पहले थोड़ी हकीकत जानिए.
बोडोलैंड क्या है? बोडोलैंड इज विद इन आसाम, उसके पास सेपरेट बोडोलैंड काउंसिल बनी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग बनी हुई है। तो आप स्टेट विद इन द स्टेट नहीं है, देयर इज अ काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ट्रिब्यूनल within the state that takes care of that particular community which are facing that they are deprived. ये उसकी बात हो रही है, कोई नया स्टेट की बात नहीं हो रही है। इससे फायदा किसको होगा? फायदा तो शांति यदि चाहिए आपको, तो पहली बात तो यह है कि जो अन्याय हो रहा है उसको बंद कीजिए। अन्याय बंद क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो अन्याय क्या हो? सुनिए 4000 हथियार आपके लूट के ले गए, 30,000 आर्म जो दिए गए हैं, मोस्टली सभी आर्म मैतेई के पास है, उसको रिटर्न करने के लिए क्यों अभी तक काम नहीं हो रहा है सरकार का? लूट के लेके जाने वाले भी इस देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक है तो लड़ने वाले तो सब नागरिक है, नेता भी नागरिक है, हम भी नागरिक है, आप भी नागरिक है, तो व्हाई दिस लॉलेसनेस? कानून की धज्जियां क्यों उड़ रही है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इसको इसमें फायदा किसका है? जिसमें इसका फायदा है वही उसका कारण है। फायदा जिनका भी होगा वो तो बात की बात आएगी कि फायदा किसको, कौन लड़वा कौन रहा है उसकी बात करो। व्हाई द स्टेट इज साइलेंट? स्टेट के मतलब मेरा आपका बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी बीजेपी है, व्हाई दे आर नॉट एबल टू एक्ट? आज 2 महीने से ऊपर हो गया, चुप क्यों बैठे हैं? व्हाई दे आर साइलेंट? फायदा उनको होगा तभी तो चुप बैठे हुए हैं। Praveen ji, can I Yes. speak? Yeah, Can I speak? Hello. Yeah, Praveen, please. yeah. Actually, I don't know if they have ever heard about the 6th schedule and the tribal self-rule. Tribal people have their own culture and they have their own tradition, and they know how to administer themselves in their own traditional way. But when it comes to the mainstream, it becomes messy. And moreover, when we talk of the forest, and the forest, there is a Forest Act in 1971, which is known as the Indian Forest Management Act, in which it says the tribal people has a stakehold in the forest, and joint development with the forest department, and the tribal people has to jointly take care of the forest. But now in the case of Manipur, they are evicting the tribal people from the forest land. तो And अगर also, ये the Forest Act 2006. जंगल को बचाने की और जंगल में अपना स्वामित्व बचाए रखने की लड़ाई है, तो इस लड़ाई का उद्देश्य तो बड़े सीधे तरीके से फॉरेस्ट एक्ट में ही पॉसिबल है। जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें इस चीज को तो पूरा उसमें समिति बनती है बाकायदा। पटेल साहब तो जानते होंगे इस बारे में कि बाकायदा उसकी समिति होती है। फॉरेस्ट एक्ट जी की जो बात अलग है, फॉरेस्ट राइट्स जो है 2006 वो भी अलग है, और ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ये भी अलग है। तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है, आप उसको मिक्सअप करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। भाई मिक्सअप क्या हो, तो है कानून उन्हीं के लिए। I feel that you need to learn, Ravindra Singh Agrawal, you need to know more history about the issues rather than poking in the between, because it's not that what we are talking now today is there is a war going on, people are being dislocated, and it is indeed within the state of a country of India, and then the Prime Minister is keeping silent, all the leaders are keeping silent. That's why this is what the National Federation Society of Fast But he is not bothered about that. That's why he's bothered about why the tribals are speaking. You need to study more. If you ask, we are not the leaders to give you. He doesn't have the knowledge of what is the administrative council, separate administrative. That's why you need to learn little bit more. I encourage you. That's all. So that is why he is asking the question. If you would have knowledge, you would not have asked. नहीं है तो नॉलेज दीजिए ना, हम तो इसीलिए तो बात कर रहा हूँ ना। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो मांग रहे हैं, जस्ट लाइक बोडोलैंड, you study the Bodoland, you will understand what is Manipur. अच्छा, सरकार को क्या नुकसान है इस कॉन्सेप्ट? ये तो सरकार से पूछिए। नहीं, मैं एक बात पूछा, सरकार क्यों नहीं बना रही होगी, उसको क्या तकलीफ? सरकार क्यों बोल नहीं रही है, ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? Why the Prime Minister is not uttering a single word? मीटिंग में that's why now you ask our file and RTI. Why you are silent? Everybody is going to intervene. It's high time. India is going to show. आवाज उठा सकेंगे, हम भी बोल सकेंगे, अगर हमें ये मालूम होगा। तो पूछिए ना, RTI फाइल करिए कि 2 महीने से ऊपर हो गया, मणिपुर जल रहा है, आप चुप क्यों बैठे हैं? फाइल एंड RTI, सिंपल। सर मैंने पूछा कि काउंसिल बनाने से क्या नुकसान है? काउंसिल बनाने से जो अभी मैतेई और इनकी जो आपकी आदिवासियों के बीच में जो झंझट है, वो झंझट पे ब्रेक लगेगा। उसके लिए बजट आता है। सरकार ब्रेक नहीं लगाना चाहती। पार्डन?
सरकार ये ब्रेक नहीं लगाना चाहती, वो चाहती है कि ऐसी देखिए लड़ाइयां चलती बजट आता है, डेवलपमेंट होता है, हिल काउंसिल की जो बात कर रहे हैं, हिल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं तो ऊपर तक गया हूँ, उखरुल भी गए, हम रोबिन सब गए हैं, वहां से चाइना बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, इतनी सेंसिटिव एरिया है, एंड वी आर प्लेइंग विद सच ए सेंसिटिव एरिया। If India is not going to intervene, we will go back to our own people, our ancestors. सिचुएशन आपको अंदाज नहीं है। उखरुल जो है, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड बीन टू उखरुल। Yes. उखरुल से आगे बर्मा है, बर्मा से जस्ट लगा हुआ चाइना है। 400 kilometers from our border to China. That's it. Not far. तो And आज why- ये सेंसिटिव है। Sensitive आज area. हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि आप एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया के अंदर आप इस प्रकार का गेम कर रहे हैं। यू आर डिस्टर्बिंग पीपल एंड ट्राइबल हु आर देयर, दे आर द मेजॉरिटी पीपल, उनके पास में अधिकार है। 6th शेड्यूल, जैसे मारिया ने कहा, शायद आपको मालूम नहीं है 6th शेड्यूल क्या है। अब खोजिए 6th शेड्यूल क्या है। One thing I want to add there, even our Nagas or maybe the Kugis or the tribal here, we don't look like Indians, so obviously favor will go. If नो, दैट इज डिफरेंट थिंग, if उसकी India हम is- बात नहीं कर रहे हैं। if India is not willing to solve the issue, I think so we'll solve in a different way, the tribal way, the No, West. this is a internet, this is a Internal crisis. issue. What I am saying is, this is a crisis situation where everybody has to be one. One. We That's cannot why. get ourselves divided. If there is oneness, and if your RTI, definitely your first justice people going to the Supreme Court and plead for it, I believe that things will also move. Supreme Court already matter is there. Yeah, great. That is great. Yeah. It is So I already think there, and we were thinking of something else. सरकार इतने सेंसिटिव बॉर्डर एरिया पर व्हाट्स द गेम सर, उसमें क्या गेम हो सकता है, वही तो जानना चाह रहे हैं हम। अगर वो गेम हमको कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग इतने सारे RTI के लोग बैठे हुए हैं, why don't you file RTI? Why you are asking us? मैटर्स को हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं जान पा रहे, इसीलिए तो हम लोग भी बात कर रहे हैं कि what is the problem? सरकार को ये सब करने की जरूरत क्या है? Why they are doing all this thing? आपको 30,000 हथियार लिया, अभी इलेक्शन आता है, आपको पास पहले ही बोल दिया जाता है कि हथियार जमा कर दो। यहाँ 30,000 आदमी किसके पास हथियार है वो भी मालूम है, उससे क्यों वापस नहीं लिए जाते हैं? चलिए, वो भी नहीं। आर्मरी से, स्टेट की आर्मरी है जहां से, जिसको हम कहें कि तोप खाना, वहां से हथियार चोरी हो जाए चलिए दिन दहाड़े, और पुलिस बोलती है कि हम नहीं रोक सकते, हम यदि रोकते तो गोली चलानी पड़ती। आधा घंटा क्या या इसमें लेम clarity एक्सक्यूज? की कमी है। अब कभी और अपन इसमें कार्यक्रम में देखेंगे। या प्लीज शिवानंद जी, दिस विल कंटिन्यू, इसको तो बंद करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात करके मैं, शिवानंद भाई, लेट मी, आई विल कंक्लूड विद इन अ मिनट। वी विल हैव टू वर्क आउट ऑन क्लिनिक, ओपनिंग लीगल एड क्लिनिक देयर। यदि हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, we will talk with the government also, we will talk with the central government also to open a legal aid clinic there, so that access to justice should be the priority. जितना नुकसान हुआ उनको मदद कैसे किया जाए उसके ऊपर बात करेंगे, and on that we will work out. Thank you sir. Sorry देवेंद्र जी, आपको थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा पहले। You study Forest Right Act, सेपरेट काउंसिल्स क्या क्या होती है, 5th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल क्या है, ये सब स्टडी कर लीजिए। Yeah, please, over to you, शिवानंद भाई। ठीक है, ये कार्य मतलब अच्छा रहा कार्यक्रम। और देखिए, ऐसा है कि वहाँ की एथनिक प्रॉब्लम है काफी पुरानी, उसको फ्यूल समय समय पर दिया जाता रहा है हर पार्टी के शासनकाल में, और अभी वर्तमान में भी जैसा कि बहुत स्पष्ट है कि जो जिस तरह के इंटरेस्ट के लोग हैं वो अपना करते रहते हैं। बहुत सारी वहाँ पे बातें भी आती हैं और सुनने को मिलता है, न्यूज वगैरह में आदमी पढ़ता भी है कि कुछ कन्वर्सन को लेकर के भी वहाँ पर बातें रहती हैं। और एक बात और भी स्वाभाविक है कि वर्तमान में जो सरकार है वो है, सबको पता है, तो उन चीज को लेकर के भी वो शायद नाराज हैं, और हो सकता है कि उसी बात को लेकर के उनको सरकार बहुत अपना मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये भी जिस तरह से बातें सामने आई हैं, तो इन चीज़ों को ना किया जाए। कुल मिलाकर के जो शांति व्यवस्था है कहीं की भी, उसको इस तरह से डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, और वो डिस्टर्ब ना होने दिया जाए। क्योंकि कुछ लोग तो, चाहे वो रिलीजियस इस तरह से इंटरेस्ट वाले लोग हों या पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग हों,
वो अपना हित तो साध लेंगे कि जिनकी जो इच्छाएं हैं वो कर लें, कि अपना एक धार्मिक साम्राज्य स्थापित करवा लें, अथवा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले हैं कि हम अपनी पार्टी को ही वहां पर अपने को इस्टेब्लिश करवा लें इस तरह से। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड में जो नुकसान होता है वो वहाँ के जो संस्कृत है, जो वहाँ की जो लोग हैं, जो वहाँ के गरीब हैं, जिनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, डे टू डे वो अपना एक्वायर कर रहे हैं और खा पी रहे हैं, जीवित हैं, चल रहा है उनका जीवन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जिस तरह से स्थितियां निर्मित हो रही हैं वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो सब नहीं होना चाहिए। और हाँ, नहीं होना चाहिए, हम आपका कहना है, लेकिन होती है, हो रही हैं और होती रहेंगी। इसके लिए हम आप क्या ये सब नियंत्रण नहीं रहेगा, तो गंभीर मामले हैं, सरकार अपने स्तर पर करे इस पर। लेकिन यहाँ पर जो भी फोरम के माध्यम से और प्रयास किए जाएं, जिस तरह से प्रवीण जी ने कहा कि भाई हम लीगल एड क्लिनिक वगैरह जो हम कर सकते हैं लोगों को, जो उनके अधिकारों के अंतर्गत जो संवैधानिक अधिकार हैं, जहाँ उनका हनन हो रहा है, उनको हम उपलब्ध करवाएं, उनको सर्विस उपलब्ध करवाएं, अपनी सेवाएं दें, तो बहुत अच्छा एक मतलब पहले से ही प्रयास चल रहे हैं और एक नए सिरे से इसको और एक वो देने की जरूरत है। और इस पर यदि और जो भी कुछ किया जा सकता है, तो जो भी लीगल एडवाइजर और हैं सब आप प्रवीण जी हैं और अपनी टीम है, वो उस पर विचार करेगी क्या किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत स्मॉल स्केल से नहीं हो पाएगा, ये बहुत लार्ज स्केल पर ये पॉलिटिकल इशूज हैं जिसका समाधान बहुत हाई लेवल से किया जाना है। और इसमें जो हाई लेवल पर जो हैं मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, इन सबको आगे आकर देखना चाहिए कि ये कैसे हो पाएगा। तो ठीक है, अब कार्यक्रम में हम यहाँ पर इसको विराम देते हैं और आगे अब हम कार्यक्रम में बढ़ेंगे। हमारा कार्यक्रम आरटीआई से संबंधित है, तो हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब। सबसे पहले तो हम एक बार प्रवीण जी, क्या हमारे बीच में वेंकट रामन जी हैं, वो कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स वगैरह कुछ आपने उनका नाम दिया था प्रवीण जी, मगर वो दिख नहीं रहे हैं। लेट अस कंटिन्यू। आप ही कर दीजिए और फिर अपन लोग आरटीआई पे टू कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक ठीक है। मिनट में करें। हाँ। टुडे on this particular webinar on Manipur and the situation in Manipur, I convey my sincere thanks to Maria, Robin, and Apostle Mr. Joseph for taking part and sharing your views. And we will look forward how to work out together and send a joint memorandum to the government of India. Thank you all three of you. Over to you, Shivanand bhai. जी, धन्यवाद प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है मणिपुर, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की समस्याएं हमेशा ही बनी रहती हैं, और इसका समाधान डेवलपमेंट से ही होगा। और लोगों को ज्यादा उनको उनके कल्चर, उनकी संस्कृति और उनके रूट से जोड़ते हुए विकास की जो अवधारणा है और शासन प्रशासन की जो अवधारणा है, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनको साथ में लेकर के काम किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो सफर ना करें, क्योंकि यदि वो सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब सफर करते हैं। तो अच्छा टॉपिक रहा आज का, इस पे चर्चा हुई, उम्मीद है इसके भविष्य में कुछ निराकरण भी निकलेगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हैं हमारे बीच में, उनको हम